क्या हुआ तरन्नुम? बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। क्यों? एवरी डे, लिटरली एवरी डे एक नया रेप केस। कभी माइनर्स के साथ रेप केस, तो कभी गैंग रेप, तो कभी किसी ओल्ड औरत के साथ। कटवा, निर्भया, वो छोटी सी बच्ची जैनब, ये सब के रेप केसेस के बाद हुआ क्या? खाली वही मीडिया आउटरीच, कैंडल मार्च। क्या करना चाहिए? मतलब 3 बेटियों की माँ हूँ मैं, मुझे कॉन्स्टेंटली डर लगा रहता है ना। आई थिंक सब पेरेंट्स का यही हाल है। राइट, डर तो लगा रहता ही है तरन्नुम, लेकिन क्या लगता है तुमको, क्या चेंज होगा? किसे चेंज होना चाहिए? Why can't this male simply change? क्यों ऐसा करते हैं यार ये लोग? बदलते क्यों नहीं है? क्या है इनको प्रॉब्लम? तरन्नुम, मैं ये सोच रखती हूँ कि हमने हर चीज़ ट्राई की है। हमने मीडिया को ब्लेम किया है, हमने पुलिस को ब्लेम किया है, सिस्टम को ब्लेम किया है, कैंडल मार्च किया है, प्रोटेस्ट किया है। कुछ चेंज हुआ? कुछ बदला? कुछ भी नहीं बदला। इट्स टाइम वी चेंज। पर अगर 3-4 लोग एक साथ मेरे ऊपर हमला करेंगे तो मैं क्या कर लूँगी? ज़्यादा कुछ नहीं तो एटलीस्ट हमें इतना अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए कि हम इतना डिफेंड कर सके अपने आप को कि हम उस सिचुएशन से अपने आप को निकाल सके। कैसा हो सकता है? जब बेटी पढ़ सकती है, बेटी बढ़ सकती है, तो तरन्नुम इट्स टाइम कि बेटी खुद को डिफेंड भी कर पाए। हम क्यों उनसे एक्सपेक्टेशन रखें चेंज होने की? बिकॉज हमें चेंज नहीं नज़र आ रहा है, कुछ बदल ही नहीं रहा है। ये तो सही है। इट्स हाई टाइम, वी रियली नीड टू चेंज नाउ। वी नीड टू डू समथिंग, कुछ हम खुद करें। एग्जैक्टली, ताकि चेंज आए। जब हम रेप सिचुएशंस की बात करते हैं तो लॉज को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, पुलिस बाद में आएगी। उस सिचुएशन में हमें अपने आप को हैंडल करना है। बिल्कुल सही। तो चलो बात करते हैं कुछ एक्सपर्ट से। इट्स टाइम वी चेंज। आप तमाम का इस्तकबाल है व्यूअर्स प्रोग्राम रेप कल्चर। इट्स टाइम टू बी योर ओन हीरो। आइए बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स से और जानते हैं उनके ओपिनियंस। जी हाँ व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं रेप्स की। रेप्स जो हमारे हिंदुस्तान में 1 घंटे में 4 होते हैं। जी हाँ, रेप कल्चर, इट्स टाइम टू बी योर ओन हीरो। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट मासूमा मर्चेंट, जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। साथ ही साथ इन्हें 11 साल का एक्सपीरियंस है क्रिमिनल लॉ और बिजनेस लॉ में, और इन्होंने मास्टर्स डिग्री ली है क्रिमिनल लॉ में। इसके अलावा आज हमारे साथ मौजूद है शाहीन अख्तर मैम। शाहीन अख्तर मैम के बारे में आपको बताना चाहेंगे, शी इज़ वर्ल्ड कराटे फेडरेशन रेफरी, फर्स्ट वुमेन रेफरी इन साउथ एशिया एंड सेकेंड इन एशिया, ऑल्सो 7th डिग्री ब्लैक बेल्ट। और साथ ही हमारे साथ है डॉक्टर तहसीन कासिम अली, जिन्हें 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ साइकियाट्री। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेप्स, जो आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम स्टैटिस्टिक्स पर नज़र डालें तो तकरीबन 34,000 रेप केसेस हर साल रजिस्टर होते हैं। और जो रजिस्टर नहीं होते उनका तो शायद हम कैलकुलेशन करें तो शायद काफ़ी ज़्यादा होंगे उनके नंबर्स भी। आज आई डोंट थिंक कि कोई भी ये कह सकता है कि आई फील सेफ इन इंडिया। ठीक है, लाइक इट हैज़ टर्न्ड आउट टू बी लाइक इंडिया इज़ नो कंट्री फॉर वुमेन। जिस तरह से यहाँ वुमेन सेफ्टी की अगर हम बात करें तो हर कोई परेशान नजर आता है। रास्ते पे चलने से पहले हमें 10 बार सोचना पड़ता है रात में कि सही घर पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। हमारे जो लोकलिस्ट हैं, मुंबईकर्स हैं, हमने इनसे जानने की कोशिश की है कि इनका क्या कहना है जो इंडिया में रेप्स बढ़ रहे हैं इस पर। सो वी कैन हैव अ लुक। डू आई फील सेफ एज अ वुमन? इसका जवाब हाँ और ना दोनों है। हाँ जब तक है जब तक मैं अपने बिहेवियर पे अपना कंट्रोल रखती हूँ तो मुझे सेफ़ लगता है। यानी कि अगर मैं सुबह ट्रैवल करूँगी तो मुझे सेफ़ लगता है। अगर मैंने इंडिया में ढंग के कपड़े पहने तो मुझे सेफ़ लगता है। अगर मैं लोकल ट्रेन में अकेले ट्रैवल नहीं कर रही हूँ तो मुझे सेफ़ लगता है। जब तक मुझे अपने बिहेवियर पे कंट्रोल है तो शायद मुझे थोड़ा बहुत सेफ़ लगता है। अकेले में मुझे सेफ़ लगता है नहीं। अगर मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ लोकल ट्रेन में तो मुझे बिल्कुल सेफ़ नहीं लगता है। अगर मैं रात में एक टैक्सी ड्राइवर के साथ ट्रैवल कर रही हूँ तो मुझे सेफ़ नहीं लगता है। अगर 4 लड़के खड़े हैं और मुझे रोड पर अकेला चलना पड़े तो मुझे सेफ़ नहीं लगता है। मुझे सेफ्टी जब तक लगती है जब मैं अपने इख्तियार में हूँ, एंड इट इज़ नॉट फेयर, क्योंकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे सेफ्टी फील करने का ये मेरा राइट है एज ए सिटीज़न, एज अ वुमन, एज अ ह्यूमन बीइंग। जो हिफाजती इक़दाम है जो हमारे जो समझदार बच्चियां हैं वो करती हैं कि जब कोई भी टैक्सी, उबर, ओला या आम टैक्सी में बैठे हैं तो टैक्सी ड्राइवर के सामने ही वो टैक्सी का नंबर अपने, आजकल हर बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन तो रहता ही है, तो वो टैक्सी नंबर जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन पे क्लिक कर रहे हैं और वो टैक्सी ड्राइवर के सामने ही क्लिक कर ले।
तो इससे टैक्सी ड्राइवर को ये समझ में आएगा कि अगर कुछ नाजेबा हरकत करता है, कुछ गलत हरकत करता है, तो लड़की के पास उसके खिलाफ पूरा गवाह एविडेंस मौजूद है। तीसरा, टैक्सी के अंदर बैठ के जानबूझ के ज़ोर ज़ोर से अगर फ़ोन नहीं भी लगा हो तो भी इस तरह से कोई जैसे घर वाली से, भाई से, वालदा से, बहन से बात कर रही है और ये कहती जाए टैक्सी के अंदर कि देखिए मैं फला टैक्सी में बैठी हूँ, अभी मैं यहाँ घर से निकली हूँ, अभी 15 मिनट में पहुँच जाऊँगी, ये टैक्सी वाला इतनी ज़ोर से बोले कि टैक्सी वाला सुनते रहे, तो उससे भी वो होशियार हो जाता है कि मुझको कोई गलत हरकत करूँगा तो मैं फंस जाऊँगा, मैं पकड़ा जाऊँगा। तीसरा जो है, अक्सर अभी आजकल बातें चल रही है और बच्चों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, लड़कियों को मार्शल आर्ट्स, यानी लड़कियों को भी ये फिज़िकल जो है कॉम्बैट बोलते हैं या मार्शल आर्ट बोलते हैं कि किस तरह से अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल करके अगर कोई उनके ऊपर हमला करता है तो किस तरह से उसको पसपा करें, किस तरह से उसको दूर करें। तो ये स्कूलों में मैं समझता हूँ कि इसकी ट्रेनिंग शुरू करना चाहिए और मार्शल आर्ट्स भी बच्चियों को सिखाना चाहिए कि वक्त ज़रूरत वो इसका इस्तेमाल कर सकें। उसमें एक हालत और जो कॉमन है, वो आजकल हर बच्चियाँ स्कूटर चलाती हैं या गाड़ियाँ भी चलाती हैं, तो सुनसान रास्ते से अगर गुजर रही हैं अपनी स्कूटर या गाड़ी पे और अगर गाड़ी में कुछ मैकेनिकल फॉल्ट हो जाए और गाड़ी रुक जाए या स्कूटर पंक्चर हो जाए तो फ़ौरन से फ़ौरन वो पंक्चर गाड़ी या बंद गाड़ी के साथ नहीं खड़ी रहें सुनसान रास्ते पे, फ़ौरन ऊबर या ओला या जाती हुई टैक्सी को पकड़ के अपनी गाड़ी और स्कूटर को वहीं रास्ते पे छोड़ दें, वहाँ उसके साथ नहीं खड़े रहें। वहाँ उसके साथ खड़े होने से जो गलत लोग हैं अगर वहाँ से गुज़र रहे हैं तो वो मौके का फ़ायदा उठाते हैं। तो इस तरह की बातें जो हैं, लड़कियां खुद होशियार रहें और अगर ये समझती रहें। इसी तरह घरों में अगर लड़की अकेली है, माँ बाप चले जाते हैं काम काज से, तो घरों में दरवाजे के अंदर एक खिड़की लगी रहना चाहिए। अगर कोई घंटी बजाता है तो पूरा दरवाज़ा खोलने के बजाय सिर्फ वो खिड़की से लड़की को बात करना चाहिए, और अगर कोई ख़त लिफाफा वगैरह आया है तो वो खिड़की से ही लेना चाहिए, दरवाज़ा हरगिज़ नहीं खोलना चाहिए। तो ये सारी बातें अगर लड़कियां ख्याल रखें और स्मार्टली इसको होशियारी से टैकल करें तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की किसी तरह की रेप वाली तकलीफ़ में वो पड़ेंगी। और मैं समझता हूँ कि ये मैसेज सब बच्चियों को पहुँचना चाहिए और ये बच्चियाँ ये चीज़ों को याद रखें, फरामोश ना करें और इसका इस्तेमाल करें वक्त ज़रूरत। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। I think there are a lot of gender biases in our culture and society where the boys are given more preferences than the girls. Like if you see, like har ghar mein hum dekhte hain, like it is always said, you know, to the girls that bhai tumko kaam karna hai ya tumko khana pakana hai, whereas the boys are never pressurized about these kind of things at all. In our society, you know, the girls are trained to accept injustices as the only way of life. And I think, you know, this is the reason I think where, you know, that the males just consider themselves to be superior or have a superior attitude. And उनकी एक सोच बन जाती है कि वो सोचने लगते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं and वो सही है. If we see in today's time, like the media even has a very important role regarding objectifying women as sex symbol. I would say, like, you know, they are adding fuel to the fire. Like if you see, like हम देखते हैं कि कितने advertisements में या films में the way the women are used. अगर advertisement में if it is like a male cream or a shaving cream or a deodorant that is advertised, why are so many women, you know, taken in for the advertisement surrounding the men? Like, I mean, they just want to show the women as a glamorous object. They're not needed in that product at all. Rape is screaming mad in the media today. Yes, I agree the perpetrators need to be hanged. They need to be punished because of these heinous crimes that they commit. They do so much harm, and they play with your minds after what happens. And as for me, I
Actually, play it safe. The important thing is, women, please, please be safe. First of all, learn self-defense. Self-defense is important because without self-defense, you are not prepared. You know, you're going out late in the evenings or whatever. Just be prepared. Keep your phones on. Keep talking to somebody. Let everyone know where you are. Even if the cab you're driving in, see that you get the number of the cab. Stay safe. And I use a pepper spray. Even if I'm driving late in the evenings, I'll carry a pepper spray which has a glove. I have a glove and I just put it into the glove and I drive. So be safe, take care of yourselves, and let's see what happens. Thank you. आज के ज़माने में जो हमारा जुडिशल सिस्टम जो है वो इतना लथार्जिक और इतना स्लो हो गया है कि क्रिमिनल लोग को ज़रा भी डर नहीं है क्राइम करने से पहले। उन्हें पता है कि उनके वकील उनको छुड़ा लेंगे या बेल हो जाएगी या कुछ भी हो जाएगा। जब तक हमारा जुडिशल सिस्टम स्ट्रॉन्ग, मैं नहीं बोलता कि जुडिशल सिस्टम गलत है, स्ट्रॉन्ग बने और जल्द से जल्द सज़ा हो जाए, जो भी क्रिमिनल्स है उसको जल्द से जल्द सज़ा हो जाए। और ऐसे केस में जहाँ रेप इन्वॉल्व है, रेप जैसा केस है, उसके बाद किसी को मार डालना, जान ले लेना किसी, ऐसे तो महीने 3 महीने 2 महीने में जजमेंट आ जाना चाहिए और क्रिमिनल को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ये सज़ा नहीं मिलना, ये वन ऑफ द रीज़न है क्राइम बढ़ने का। बिल्कुल क्रिमिनल्स को ज़रा भी डर नहीं है कि वो क्राइम करने से पहले सोचते भी नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका रिज़ल्ट क्या होगा। उनको पता है वो छूट जाएंगे। इसीलिए रिक्वेस्ट है जुडिशल सिस्टम से कि स्ट्रिक्ट एंड फास्ट, वी डोंट नीड अ फास्ट ट्रैक कोर्ट नाउ वी नीड अ सुपर फास्ट ट्रैक कोर्ट कि ऐसा केस आया तो मैक्सिमम 2 महीने 60 डेज़ के अंदर उसकी सज़ा होनी चाहिए क्रिमिनल को। जैसे कि हमने देखा, तो मैं ये जानना चाहती हूँ मैम आप लोगों से कि आपके क्या ओपिनियंस हैं, आपके क्या व्यूज़ हैं? डू यू फील सेफ इन आवर कंट्री? मासूमा मैम। Sometimes yes, sometimes no. After incidences like that happen, of course, I also don't feel safe. It is like traumatizing, but gradually then I need to be aware of certain things. I need to be alert, and that is a wake-up call for me that yes, I have to be alert while moving around. We need to be our own hero now. Yes. Exactly. शाहीन मैम, आपका क्या कहना है? I am the kind of personality that I have and the kind of skills that I have. I definitely feel confident. I will not say safe, but I feel confident that I am capable of handling the situation. But I am feeling very scared of my generations, of my women in my family, of the women in my society, of the women in my country, because everybody is not of the same time as I am. Right. So definitely it's not safe as a country to live in. Exactly. Looking at the scenario of today. Doctor, what do you have to say? What we can do is better be well prepared. I mean, I hope it never happens to anyone, but it's better if I am well prepared and I have a proper planning that unfortunately if I fit in, I have to face such a scenario, I know what my actions are. Right. We freeze most of the time, so I'm going to be mentally prepared about my actions, about what I plan to do if I am in such a scenario so that I don't freeze. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बहुत हो गया, अब खुद बेटी को इतना सेल्फ सफिशिएंट बनाओ कि वो अपने आप को खुद से प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ सके। Exactly. डॉक्टर तहसीन, अगर रेपिस्ट की बात की जाए तो नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि वो उनका फर्स्ट केस नहीं होता है, यानी कितनी बार ऐसा होता है कि वो बार बार रेप करते होते हैं, सिर्फ ऐसा है कि वो पकड़े नहीं गए हैं पहले रेप केस में। तो ऐसा क्या है कि मतलब क्या किया जाए कि उनको आइडेंटिफाई किया जाए, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि उनको देख के समझ में आ जाए, या फिर ऐसे लोगों को चेंज कैसे किया जाए? So first of all, the reason that they're capable of repeating the same offense again and again is because we have kept quiet. Yes. So number one, we don't keep quiet because unfortunately we had to face that situation, but we gather a little courage and do something about it so that there's no second person after me. ये जो मेंटालिटी होती है लोगों की, नाम बदनाम होगा, पुलिस में बात जाएगी, तो इसे बदलने की ज़रूरत है। See, because unfortunately, not just in India, there are a lot of studies going on in UK, a lot of studies going on in US, where the whole guilt, the whole shaming process, that is all on the victim. I am a victim, so if I go back to my college tomorrow or if I'm going back to my office tomorrow, people are not coming. There'll be very few who will come up and ask me, you know, how you're doing, or just come and give a pat on my back, or just give me a hug, or
actually they'll be reluctant to give me a smile and to acknowledge my presence because I have been a victim. Yes. Here I am a victim wherein it's not my fault at all. I have not told the person that come ahead and rape me. Yeah. Right. Okay, but the shaming is going to happen of the victim. So unfortunately, this is what the scenario is, and not just in India. Worldwide, this is what is happening. So we need to stop that as individuals. Okay. Okay, we need to stop whispering around, going back behind and discussing, oh, this is the one, oh, you know what happened. We need to stop that. Second, about recognizing these individuals, the accused that we are talking about. Agar ek, you know, a lot of time when those studies are done and psychological analysis is done, a lot of times they don't have that guilt. Because see, if agar aap ek galti kar rahe ho, and if you're guilty about it, or you feel that I have probably done something wrong, you will be aware of that and you will not repeat the same act all over again. This Like is in for most of the Nirbhaya, crimes. yeah. Most of the crimes. Most for of the this is- crimes, as simple as if I am taking a glass of water and it's a glass, so if it falls down and it breaks, I'll be careful. I'll ensure that, you know, I am careful with that glassware every next time that I have a glassware in my hand. So similarly, when you conduct something which is as heinous as this or as emotionally disturbing for the other individual, अगर आपको लगता ही नहीं कि आप गलती कर रहे हो तो आप कैसे रोकोगे अपने आप को? जैसे निर्भया केस में हमने देखा था, the driver said कि why she was out so late. Exactly. So I am right, the other person is wrong. Even in these scenarios, most of them do not feel the guilt. They do not feel that they have probably done something wrong because I'm a man, so I have the higher authority over a woman. This is unfortunately what most of the men feel. I mean, I have seen some amazing people who are wonderful men also who are talking about equality, doing things, helping in the household. That part of society is also there. That a good percentage of men that way are also there. But unfortunately, there's a good percentage of men who are of this thought process also. So the whole the precaution that we are talking about, or how do we prevent such incidences, that is from the time we are teaching our kids. Yes, it is very important. It is extremely important. You teach your son to respect women. You teach your son, and when you're talking of women, it starts very basically at home with your siblings, with your sisters, with your mother, with your housemaids. It starts from there. It's the grassroots that we really need to work upon. So if I teach you that, you know, you respect a lady decently, or if there is a guest in the house, I teach my daughter that, okay, you have to take a glass of water and welcome them. So even I do the same thing to my son too. At times when before teaching our daughters कि भाई ऐसे बैठो ऐसे मत बैठो, बेटों को भी सिखाना चाहिए कि भाई ऐसे मत देखो बेटी की तरफ, यानी कोई भी लड़की तुमको in general दिखती है तो उनको ऐसे तरह से मत देखो. So that is as simple as respecting your own women, right? I mean, here you will find a lot of chivalry with the guys pulling a chair for a female friend or holding the door for the female friend. But when it comes to their own sisters and their mothers, of course they love them, they care for them, they do show their ways of you know, love and respect to them in certain ways, but the chivalry is not the same. Discrimination पहले से ही है. जैसे हम लड़कों को कहते हैं कि लड़की की तरह मत रो. Exactly. या जो बेसिकली काम वगैरह करना होता है तो हम लड़कियों को ज्यादा सिखाते We हैं. have just strategized. This is how you play. This is how a guy should be, or this is how a girl should be. If you are a guy, you can't be playing with a doll. If you are a girl, you shouldn't really be playing with a car. Gender roles. You know. जी. तो बेसिकली दिस इज जेंडर बायस जो आगे जाकर इन चीज़ों की जड़ बनता है. Exactly. मैम हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इंडिया, हम अगर हमारे हिंदुस्तान की बात करें, वी आर प्राउड इंडियंस. 70 इयर्स पहले हमें इंडिपेंडेंस मिला था, लेकिन एज अ वुमेन आई डोंट थिंक कि आज हमें से कोई भी फ्री फील करता है. हमें रात में जाने से पहले सोचना है, कपड़े पहनने से पहले सोचना है, बाहर निकलने से पहले सोचना है. तो आज क्यों हमारा जुडिशल सिस्टम इतना वीक है, या कौन सी चीज़ गलत जा रही है कि लोग, आदमी अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग फील करते हैं कि उन्हें लॉ वीक लगता है. So people have to be aware of their rights. They have to be aware of, women especially, be aware of what are your rights, be aware of what laws are made for you. That is very important. And then at home also, you
if somebody is a lawyer or some neighbor is a lawyer, you try to gain that knowledge. Right. Gaining such kind of knowledge, being prepared, knowing what is to be done, that is very important. After all, laws are made for us. Exactly. So we are not aware ourselves. That is the whole issue. जिस तरह आपने हमें बताया कि लॉ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम लॉ के बारे में नहीं जानते. तो जो ऐसे केसेस होते हैं रेप केसेस में, जो वहीं पुलिस का रवैया देखा जाता है, तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर हम प्रियंका रेड्डी केस की ही बात करें, तो जब पेरेंट्स ने पुलिस को अप्रोच किया, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट पुलिस की तरफ से इनके पेरेंट्स को दिया गया, वो स्टेटमेंट ये था कि आपकी बेटी भाग गई होगी. इस तरह के इनसेंसिटिव स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं विक्टिम के पेरेंट्स को, और पता ही नहीं होता है विक्टिम के फैमिली वालों को कि रिएक्ट कैसे करना है या अप्रोच क्या है, प्रोसेस क्या है. हमारे जो व्यूअर्स हैं, मैं चाहती हूँ हम इन्हें बताएं कि जो प्रोसेस होता है पुलिस कंप्लेंट का, ये किस तरह होता है, और इन केस अगर पुलिस आपसे कोऑपरेट ना करे तो क्या करना चाहिए. Okay, ideally the parents first went to file, the daughter has not come back home, so a missing person's complaint. Okay, Right. so that is the reason why, I mean, that was a very bad statement by the cop to make, you know, she must have run away or something like that. At least generally there is like a 24 hours window gap in between, because if somebody has run away, the person will come back. That is the procedure aspect. Okay, then, and I don't think till then the parents were aware that something like that has happened with their daughter. Okay, Right. and yeah, if they could, if the location, I mean, she had called her sister also at that point of time. She said also she is scared. Yes, she did say that. Now, what comes into the picture is the patrolling and surveillance part. Yeah. Were the cops patrolling in that area? Isolated areas, police have to do patrolling and surveillance. Was that being done? That is where the question mark comes. Okay? Second, now what happens is the victim, after finding out, when the parents found out, they went and spoke to the cops. They're a little insensitive because there are many cases that come in like that. And most of the times, girls who run away, they come back home. Okay? But yes, if in such a scenario, at that point of time, it was not clear whether it was a rape or what was the issue, when it happened the next day it came up, yes, of course, then the police had to take action at that point of time. एंड फर्स्ट इंस्टेंस पे यानी जो विक्टिम है अगर वो जाता है तो क्या एफआईआर दर्ज करना पुलिस के लिए ज़रूरी नहीं है? Missing person ka complaint, a missing person ka complaint will be taken because there is a window gap of some time. Right. Okay. Now, initially the parents also, neither did the sister know that a rape has occurred at that point of time because the victim is somewhere else. You're just worried that the child has not yet come home. Okay. But in case if such a victim comes home, okay, the first thing is go to the police station and record the entire statement, file an FIR. Okay. Prior to that, the relative has to be strong because the victim is not strong. Victim can say many things which may not, because the victim is in a trauma, may not mention that later on. So at that point of time, one relative has to be vigilant at that point of time, and उनको है ना जो चीजें उनकी whatever has happened with the victim वो jot down करना चाहिए. Okay. रिकॉर्ड भी कर सकते हैं? Recording, but then that cannot be given in the police station, right? So what happens if it is in a written format, and if you go police station mein aap jao, if a cop is not taking the complaint down, then of course what you can do is that written points can be submitted in the inward police diary. Inward police diary क्या होती है मैम? At times what you do is generally go to the constable, okay, you ask who किससे बात करना है, किसको बोलना है, there's a complaint lodge करना है, okay? Before that, take that in writing before entering the police station. Okay, at home you have to be vigilant at that point of, you have to be alert, because it is expected that probably the cops won't take action. Right. Okay, so you get that jotted down, one with the relatives, come to the police station. Anyways, inward mein when you're entering a police station also, whomsoever are the visitors, their signature is taken. They maintain a diary out there. Right. Okay, and then you speak to the cop. If he's not taking down the complaint, you go back down. There is an inquiry office always downstairs, or on the ground floor, or in the room itself. The thing that you jotted down in writing, just submit it over there. Take an acknowledgement. That will get registered in the inward diary. Okay. Once that gets registered, then you can easily go to the superior that the junior did not take down the complaint. The superior will definitely act on it. And all the more there are amendments made where sexual assault, sexual harassment, rape cases where the complaints are not taken down, even the cops will be pulled out for that. They can undergo suspension also. Suspension. So they are like supposed to be recording the statement, but this is also there via the 2013 and 2018 amendment. Okay. Yes, so this awareness needs to be created.
If somebody is not doing their job, you get the job done. So you have, it makes a stronger case that you did come on time, you did complain, but the cop was not recording the complaint, and you did file an inward entry, and that inward entry, that document is seen by the various cops in the police station. खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ होता है तो पुलिस स्टेशन जाने से पहले आप पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए, विक्टिम का जो बयान है वो लिख लीजिए, और इससे पहले कि आप जाके पुलिस स्टेशन में किसी इंस्पेक्टर से बात करें, जो इन्वर्ट है, जो स्टार्टिंग में जो एंट्री करते हैं आपके आने की, आपको वहीं पे एक्नॉलेजमेंट ले लेना है. Yes, take a Xerox copy, take the acknowledgement to invert, they will write on which date and everything, and that will be easier to pull them up before the superiors. It is also proof. Yes, it works as an evidence that you came and you reported the matter on them. Sometimes there are issues where they say they have come after 2 days. And of course, once a complaint is lodged, then unka fir examination hota hai pura कि actually whether the rape has occurred or not. The entire report comes out of that. So you know, keeping a 2 days gap also wherein the FIR is not lodged, that also becomes problematic. But you have put in the entry beforehand, and then it corroborates with showing that the cop did not take action at the right time. He did not lodge my FIR, and you can say it. Okay. और ऐसा करने से शायद जो कॉप्स है वो भी थोड़ा डर जाए कि भाई ये तो अवेयर इंसान है, और फिर वो लोग भी अपना प्रोसेस फास्ट स्टार्ट करें जो आगे का प्रोसेस है, लाइक विक्टिम को पकड़. They can be suspended. There is for up to 6 months. Yes, they can be suspended as well. It's time कि हमें हमारे लॉस पता हो, ताकि बीट पुलिस और बीट सिस्टम कोई भी हमें मिसगाइड ना कर सके. You need to know the laws. तरन्नुम, आप क्या जानना चाहेंगी लाइक शाहीन मैम से? मैम, कुछ महीने पहले मैंने ऐसा न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि लाइक कुछ लड़के थे जो ईव टीजिंग कर रहे थे. एक ग्रुप था लड़कों का, खड़े थे नॉर्मली, एंड वो लोग बहुत सारी लड़कियों को छेड़ रहे थे. फिर तभी वहाँ से कुछ कराटे टाइक्वांडो जानने वाली लड़कियाँ पास हुई, और जब उन्होंने ये चीज़ देखी तो उन्होंने फिर उन लड़कों की धुलाई कर दी. यानी वो 2-3 लड़कियां थी, पर ग्रुप काफ़ी बड़ा था लड़कों का, फिर भी उन्होंने धुलाई भी की, प्लस उन्हें पुलिस स्टेशन भी लेके गए. बिल्कुल. तो क्या आपको लगता है कि ऐसे सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स अगर सीखे हम तो वो रेप के अगेंस्ट हमारी हेल्प करेंगी कुछ? बेसिकली सेल्फ डिफेंस का मतलब क्या होता है, और एवरी पर्सन इज़ नॉट द सेम इन एवरी सिचुएशन. जो सिचुएशन आपके साथ, जो आपके ऊपर खुदा ना खासा गुजरी है, वो ज़रूरी नहीं है वो दूसरों पर भी वही सिचुएशन गुजरे. और देर आर नो फिक्स टेक्निक्स, क्या वो ऐसा आएगा, ये रेपिस्ट ऐसे ही आएगा, ऐसे ही अटैक करेगा, ऐसा. सो देर आर नो टेक्निक्स. फॉर मी सेल्फ डिफेंस इज अ रिफ्लेक्स of your reactions to a particular situation. Means in short, it's the awareness. Means आप किस तरीके से एक situation से react करते हो. Because these girls were trained in martial arts, definitely they had the awareness. Yes, बिल्कुल. कुछ पहले भी पास हुई, but उन्होंने react नहीं किया. Yes, they did not react. क्योंकि उनका confidence. The repercussion जो उन्होंने उनकी पिटाई करी और जो उन्होंने उनको police station लेके गया, that was the reaction to that situation. जो हर कोई लड़की नहीं रिएक्ट कर पाती है. So martial arts definitely helps you to develop that awareness in you. तो जो आप सेल्फ, मतलब martial arts is that, आप देखो martial arts is a strong sport. तो 100% आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल जो आता है ना, तो आपको ऐसा लगता है भले आप मार नहीं सको, लेकिन आप में इतना कॉन्फिडेंस है, या दो अगर वो मेरे को 4 मारेगा ना, मैं उसको 2 मार के रहूंगी. फाइट बैक कर, आई कैन फाइट बैक 100%. और जब एक लड़की फाइट बैक करती है ना, फिर वो लड़के का जो ईगो रहता ना, पूरा चकनाचूर हो जाता है. So this is the situation, and definitely martial arts will definitely help. Definitely. मैम, जब हमने मार्शल आर्ट्स की बात की तो वही हम अक्सर एक कॉमन चीज़ है जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी देखते हैं. काफ़ी बार हम बाहर जाते हैं अगर अच्छे से रेडी वगैरह होकर, तो गाइस स्टेयरिंग एट अस और यू नो पासिंग कमेंट्स एट अस. तो एज ए वुमेन आपको क्या लगता है, क्या रिएक्शन देना चाहिए ऐसे वक्त आपको? As you stare back at them, why are they staring at you? You take that as a positive. बोलना क्या कभी देखे नहीं आपने, मतलब haven't you seen a beautiful lady? I know, I appreciate I'm beautiful. I mean, why do you shy away from that situation? You need to have the guts to face them. अगर आप डरोगे वो सिचुएशन से, वो आपको और डराएंगे. अगर आप you stare back at them, आप देखो, you try this. When you stare back at them, उनकी नजर नीचे हो जाएगी. Right. They will move away because they know this is a no nuisance situation. Means this girl will not tolerate any nonsense. Exactly. तो फिर वो next level बढ़ता ही नहीं ना. अगर आप जा रहे हो and somebody staring at you and you are scared of what? You are scared of a stare. वो stare आपको खाएगी? बिल्कुल नहीं. So मतलब जो confidence, what I will basically say is martial arts very important to develop that self confidence in a feminine gender, which by nature is considered
weaker section Exactly. compared to a male. हमें एक उनका आई कॉन्टैक्ट, यानी हमें स्टार्टिंग जो है, अगर किसी के आई कॉन्टैक्ट को भी हमको बर्दाश्त नहीं करना है, उसी बिल्कुल के नहीं, लिए क्यों हमें- बर्दाश्त करोगे? हाँ। Why are you a commodity? आप कोई अगर चीज fight हो? नहीं करे, एटलीस्ट रेज योर वॉइस। Definitely. Raise your टाइम voice. के जो हम डर जाते हैं डरना कि नहीं किसी ने है। हमें देखा तो हमने अपना बुर्खा सही कर लिया। बिल्कुल, आप सोचते हैं अपना हमारे में अंदर कुछ सही दिख रहा कर है लिया। जो वो हमको देख जी, रहा है। या वहाँ से उठकर चले गए। नो No, why? वही वक्त उस रुकिए, आप वही make वक्त the fight situation कीजिए। that वो वहाँ से उठ के चले जाए। Exactly. आप क्यों उठ के जाते हो? You are making the male used to this kind of situation, Right. that a female is supposed to walk away or shy away when you are staring at that person. जी, अब ये वक्त है कि अगर आप डरोगे तो आपको और डराया जाएगा। बिल्कुल, ये जैसे आपने दुनिया का कहा। उसूल है. It goes Exactly. anywhere, not only जी। in rape, not only in whatever situation, but practically everywhere. Exactly. बात सही है व्यूअर्स, बहुत ही ठीक कहा है मैम ने। हम किसी की नज़रों को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हम हमारे रिएक्शंस को ज़रूर चेंज कर सकते हैं। और जिस दिन हमने हमारा रिएक्शन चेंज कर दिया ना इस ईव टीजिंग की तरफ या इस तरह के रवैये की तरफ, शायद वही वक्त होगा जब हमें किसी लॉ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। मैम आपसे ये जानना चाहूँगी मैं कि जहाँ हम रेप केसेस की बात कर रहे हैं, एक चीज़ है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। हमारे पास CCTV फुटेज होती है, DNA रिपोर्ट होता है, विक्टिम ने बयान दे दिया होता है, काफ़ी केसेस में कन्फेशंस भी होते हैं। तो हमारा जो सिस्टम इन्हें एक ट्रायल का मौका देता है, एक डिफेंस लॉयर देता है, क्यों ज़रूरत है हमें इन चीज़ की? हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं रेप अक्यूज्ड को? नहीं, you're not protecting the rape accused, but there is a procedure established by law जो हमको follow करना पड़ता है. The Constitution says that it states that in Article 21, you have a right to live your life and you cannot be deprived of your liberty. Okay, that's one thing. But then you're violating the liberty of someone else. Yes, so therefore procedure established by law. Article 21 consists of a lot of rights. Therefore, you have rights like a fair trial, free legal aid, okay, and the concerned accused, even people in prison, they have rights, okay. And Article 14 talks about everybody being equal in the eyes of law and deserving equal protection of law. So when there is a procedure established, then we have to follow that procedure. I agree it gets delayed, but at the same time, it's because of the evidence that is coming in. The DNA reports take time. That is where time is consumed. But Plus, how you long have. does the DNA report takes? यहाँ पे तो फास्ट ट्रैक केसेस बोल के भी हम निर्भया का केस ही देख लीजिए। Yeah, it's almost 7 years. Right. So जस्टिस कहाँ है इस सिचुएशन में? हमारा लॉ कहाँ है? The law is there. That's why the accused is not given the liberty to move around. His liberty is taken away. Okay, and then he is treated as an accused in the court of law. Evidence has to be adduced against him. If he is proved guilty beyond reasonable doubt, of course there can be. Now life imprisonment doesn't mean 14 years or 21 years. Now it is specifically given life imprisonment means the remainder of the life of the accused. So he completely loses his right of freedom of liberty. He completely loses that. I agree, the process takes time, but it is a full and final process because constitutional law applies. That's the reason why. Okay, in the rape case, the laws that are there, of course, you have seen in 2013, काफी amendments हुए after the Nirbhaya rape case. Like amendments like what? The very definition of rape has changed completely. Okay. At that point of time, not many things were mentioned in the definition. Now it has a very wide meaning. Okay, and post that, then came in the stalking. Stalking is where somebody is actually following you, who's following you even through cyber stalking. Okay. So that is stalking. Social that is media. also an offense. Sexual harassment at workplace, there is an act separately for it, but sexual harassment as an offense has come in the IPC also. That amendment was also made in 2013. Okay. And then after that, voyeurism is something, where people peep in other people's houses, that is also an offense. So many of these changes have been made in 2013. Now in 2019, there is a bill pending. Okay. If rape is defined under section 375, 375A is one definition that has come up where, eve teasing or talking something vulgar about a person, that amounts to a sexual assault. So that is going to be, I don't know when, but yes, the amendment bill is still pending. Normally ये भी देखा गया नीलम कि जब ट्रायल होता है ऐसे लोगों का तो उनको बोलते हैं कि मेंटली सिक है, राइट, या फिर माइनर्स है, उनकी सजा कम करवा दी जाती है, जुवेनाइल कंसिडर किया जाता है। हाँ, तो ऐसे केसेस में क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली। सो डॉक्टर तहसीन, आपको क्या लगता है
कि क्या रेपिस्ट एक्चुअली मेंटली सिक होते हैं या फिर जो उन लोग को कम सज़ा मिलती है, तो ऐसा होना चाहिए? इज़ इट जस्टिफाइबल? सी काफ़ी जो अक्यूज रहते हैं ऑन साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन एज पर वट एवर स्टडीज़ हैव बीन डन, कोई ना कोई साइकोपैथोलॉजी हमेशा यूजुअली इट इज़ देयर. सी इफ़ यू मेक आप बहुत सारे आदमियों को खड़ा कर रहे हो, एवरी वन डज नॉट हैव अ सेम वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स और द सेम वे ऑफ लुकिंग एट वुमेन. कहीं ना कहीं एक सोच में गड़बड़ है, तभी वो उस तरीके का बिहेवियर कर रहा है ना. So a lot of them, yes, they do, and they do usually have some form of psychopathology जो ये सब behavior के वजह से उठ के आती है. A lot of time if there are some personality issues, like we have spoken about personality disorders before also, so somewhere about cluster B personalities or antisocial personalities, not that every individual who has an antisocial personality is going to be someone who's going to be a rapist, but majority of them can be from that pool. Okay, so one अगर हम जल्दी उसको पिकअप कर सकते हैं, other behaviors से भी पिकअप कर सकते हैं. Not that everyone who has an a different behavior than what the societal norms are or the usual societal norms are, but अगर हम इस तरीके के behavior देख रहे हैं, as simple as how your relative is speaking to another woman, or how they are dealing with other law issues, like you know, as simple as picking up 10 rupees from somewhere is not a big deal for them, कि 10 रुपया ही तो है, इसको चोरी थोड़ी बोलते हैं, या मेरी मम्मी का ये तो है, मैंने बिना पूछे लिया, उसको चोरी थोड़ी बोलते हैं. तो अगर ये बिहेवियर को भी, हाँ, छोटे बिहेवियर, छोटा भी क्राइम टाइप के बिहेवियर है, उनसे हमें which we take for granted, अरे बच्चा है, अरे जाने दो, अरे घर में से ही तो लिया है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं. We can pick up such kind of behaviors and try to take some form of help in that. You know, there is something called as psychotherapy, that is counseling, that we have also taken spoken about previously. Then probably some amount of help can be done. And अगर हमने ऐसे 50 पेशेंट्स लिए और उसमें से अगर एक की भी टेंडेंसी है that probably he can end up doing such a crime, then we can to a great extent try and stop them from that. अगर paraphilias है, like ma'am has spoken previously about voyeurism and exhibitionism and all that stuff, then of course that can be treated to a certain extent with the help of medications. ट्रीटमेंट हो ताकि वो आगे ऐसी बुरी हद तक नहीं जाए कि वो लोग ऐसे बड़े बड़े क्राइम नहीं. अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप कम्युनिकेट करेंगे. सी नो वन इज गोइंग टू टेल यू, ओ यू नो आई हैव दिस प्रॉब्लम, देयर विल बी वेरी फ्यू पीपल, क्योंकि उनके हिसाब से तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना. आपने पहले कहा था कि उनमें वो गिल्ट नहीं है, उनको पता ही नहीं है, देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग दैट प्रोबेबली दिस इज समथिंग व्हिच इज रॉन्ग. अगर मुझे वो समझ ही नहीं है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, तो फिर मैं उसके बारे में कहाँ से हेल्प लूँगी और मैं उसके बारे में क्यों एक सेकेंड थॉट लाऊंगी. जी बिल्कुल. सो दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक छोटे छोटे बिहेवियर से वी कैन पिक दैट अप एंड ट्राई टू हेल्प देम इन सच वेज. अगर सपोज हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं और कोई है, जैसा मैम ने बताया पहले भी, कि वो देख रहा है हमारी तरफ, तो देखने के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि उसको देख के हम थोड़ा आइडेंटिफाई कर सके कि भाई ये कुछ तो मेरे साथ ऐसे नहीं, नॉट नॉर्मल रेप तक नहीं, बट कुछ वाइब्स यू गेट या ऐसे कुछ. Anything that is making you uncomfortable is not right. ऑपोजिट पर्सन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग ऑब्जर्व कर सके, जगह अगर हम ऐसे अलर्ट रहे इतने कि हम क्या ऐसे ऑब्जर्व करें कि हमें पता चले कि भाई See, if there is some kind of facial expressions that they are making, or even their stare is making you uncomfortable. Like I'm speaking to you with an eye contact, you're of the opposite gender, and if it is making me uncomfortable, it is a hint that if I'm not comfortable, it is a deal for me. I don't need to wait for someone to actually whistle at me or you know, touch me or make any kind of gestures to make me uncomfortable. It is as simple as if I feel your body posture, the way you are looking at me, or the way, you know, you're Touch bending forward, or the kind of body language that you have. And if such an incident is happening, you do make a scene, you do make people aware of it, that no, this is happening. Because this is happening to you. If you keep on taking it, it is going to happen to a lot of other people. Identify such people. ऐसा कुछ किया हमने रेस बॉयज की, तो वो पर्सन भी आइडेंटिफाई हो जाएगा, दूसरों को भी पता चलेगा, और वो छोटे से स्टार्ट होके शायद कहाँ तक पहुँचेगा हमको नहीं पता ना. वो इंडिविजुअल में भी वही बस में उतनी उसकी जर्नी में 3-4 लोगों को वो कर देगा. हम ये ढूंढने लगते हैं कि मुझ में तो गलती नहीं है,
नहीं है। अगर कोई स्टेयर कर रहा है तो पहली चीज है मैं अपना नेक देखूंगी या मैं दुपट्टा देखूंगी कि इज समथिंग रॉन्ग विथ मी, लाइक try to correct ourselves. एग्जैक्टली, सो वी Normally ट्राई टू parents फाइंड भी। faults within ourselves. you are Anything having- that makes you uncomfortable, be it whether that individual is touching you or not touching you or whistling or not whistling, whatever it is, you're looking at me and I'm uncomfortable, so it is not right. ओके तो जैसा कि मैम ने बताया ऑलरेडी कि ऐसे लोगों के लिए मेंटली जिससे है भी तो उनके लिए ट्रीटमेंट्स मौजूद है, तो क्या सिर्फ ये बुनियाद पर उन्हें थोड़ी कम सज़ा मिलती है? ऐसा होना कैसा है? ये बुनियाद पे कम सज़ा नहीं मिलती है, बिकॉज इवन इफ यू सेइंग दैट द पर्सन इज मेंटली सिक, so mentally sick person means somebody who doesn't have in law, in the eyes of law, who doesn't understand the consequences of his acts. Okay, here in this case the person definitely understands the consequences of his act, and at the same time, like in the case of the juvenile, in the Nirbhaya rape case, 3 years rehabilitation center का उसको punishment दिया गया था. That is also wrong. Now, how can you consider such person as a juvenile when he is capable of committing the crime? Agreed. Generally abroad such a juvenile is treated as an adult only, but in India the laws are such, below 18 the person is considered to be a juvenile. So therefore what they do is they try to reform him and make him a good person, as we say, and then send him back to the society. But ma'am, don't you think अगर हमारे laws ऐसे होंगे कि हम अगर इन्हें juvenile consider करेंगे तो जो छोटी एज ग्रुप के boys हैं उन्हें एक अलग ही तरह का मैसेज जाएगा? The mentality aspect, if the child is a juvenile or if the child is an adolescent, Indian Penal Code clearly mentions a child below 7 years is incapable of committing a crime. A child between 7 to 12 years, it depends on his understanding capacity. Okay. So therefore they are put, so you can reform a child. Okay. You can reform an adolescent to a certain opportunity, extent. right. So when we say it all starts from home, it all starts from childhood, where you teach them to respect. So probably what happens with these juveniles or with these adolescents, there's something known as a crime multi-causation theory, wherein the different environments that it's the friends, is the environment that you live in, all of these things. Probably he's being raised by a single parent, probably he's been living in an abusive family. Okay. So all of these things, it affects the mentality of the person. Okay, so when a person becomes like a hardened criminal in this form, that is where the problem starts. So therefore below 18 they try to reform them. शाहीन मैम, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह हमें डॉक्टर ने बताया कि हमें वाइब्स को अंडरस्टैंड करना है, और अगर आप एक बार समझ जाए कि कोई आपको बुरी तरह से देख रहा है या टच करने की कोशिश कर रहा है, पुश कर रहा है, तो क्रिएट अ सीन ताकि दूसरों को पता चले. बिल्कुल. जिसके लिए आई फील यू नीड दैट कॉन्फिडेंस टू डू दैट. बिल्कुल. बिकॉज अगर आज हम हमारे माशरे की लड़कियों की बात करें तो माशाल्लाह से लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और हमें पता भी है कि हमें ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है. लेकिन अगर सेल्फ डिफेंस आए तो मैं ये मानती हूँ इंसान ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो सकता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो वहीं जहाँ हम बच्चों को हर चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं, स्कूल में डालने का मकसद ये होता है कि ये अपने आप को एजुकेट करे. तो डोंट यू थिंक स्कूल में ही एक सब्जेक्ट होना चाहिए एज सेल्फ डिफेंस? ओ बिल्कुल, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और लॉट ऑफ स्कूल्स, इनफैक्ट CBSE स्कूल्स हैव इंट्रोड्यूस दिस एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट. जैसा हमारे स्कूल में एक एक्टिविटी होती है PT, तो फिजिकल ट्रेनिंग. तो वैसे CBSE स्कूल के बोर्ड पर आया हुआ है दैट यू हैव टू इंट्रोड्यूस मार्शल आर्ट्स और सेल्फ डिफेंस एज अ इट्स अ पीरियड इन द करिकुलम, which is very important, but lot of schools have not inculcated this practice, which I think it is very very important. Because अगर आप बचपन से ही ये स्टार्ट करोगे बच्चों के अवेयरनेस करना, be it a boy, be it a girl, martial arts actually, if you go to see the depth of martial art, the first thing now because of this rape cases and all, for you martial art is like a self defense. Okay, it's like a defending technique of a female gender, of the weaker section. But martial art is something that the first thing that a karate will teach you is respect and discipline. So when you learn that art, naturally by default, चाहे वो male student हो या female हो, that discipline and self respect will naturally come inside the child. वो naturally, जैसा हम बोलते हैं ना, हमको बचपन से ही घर का माहौल ऐसा करना चाहिए कि वो जैसा डॉक्टर हैज सेड दैट यू हैव टू इनकलकेट दैट राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड. सो इफ यू इनकलकेट रिस्पेक्ट एंड डिसिप्लिन, ऑटोमेटिकली व्हेन द चाइल्ड बिकम्स एन अडल्ट,
male becomes an adult, he will not indulge in this kind of activities जो हम देखते हैं. मेल्स पे भी ऐसा पॉजिटिव Definitely, 100% definitely. और अर्ली और गर्ल्स में ये हो जाता है कि they become more confident. Right. और फिर उनको अपना they become more aware, they become more alert how to react in a particular situation, whether the situation demands to fight back, whether the situation demands you have to shout, or whether the situation demands you need to run away from it. Okay. Any kind of an act that is demanding in that situation is an act of self-defense. Yeah. You need not necessarily beat up that person and it's called self-defense. No. You may run away from the situation. It's a self-defense. You may shout aloud and make the people around aware that something wrong is going to happen. That is an act of self-defense. तो सेल्फ डिफेंस से इतनी अंडरस्टैंडिंग या सिचुएशन को इतना बेटर तरीके से टैकल करना आता है. लाइक अगर किसी को कोई छेड़ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर ईव टीजिंग का केस है, तो वहाँ पर उस पर्सन, जिस लड़की को जिसे सेल्फ डिफेंस आता है, वो इतना अच्छे से सिचुएशन को हैंडल कर पाएगी. डेफिनेटली. देखो अभी एवरी इंडिविजुअल इज नॉट द सेम. हर इंडिविजुअल की कैपेसिटी इज नॉट, ऑल 5 फिंगर्स आर नॉट द सेम. सम आर मोर स्ट्रॉन्गर देन द अदर्स. सो अगर एक लड़की अगर एक पर्टिकुलर ए लड़के को मार सकती है, जरूरी नहीं वो बी लड़की भी उसको मार सकेगी. बट व्हाट आई जस्ट मेंशन्ड अर्लियर इन द बिगिनिंग ऑफ माय कॉन्वर्सेशन वाज द रिएक्शन, the reflex to a particular situation. Definitely वो सीख जाएगी. Yes. So for her, moving away from that situation is an act of self defense. For another person to fight it out, उसको एक लाफा दे के जाना, that is her act of self defense. So this is the reaction to a particular situation which the awareness will naturally inculcate in a child. जब वो self defense सीखता है, वो martial art सीखता है, right from the time the child is in school. So ये एज ग्रुप है, यानी जल्दी स्टार्ट हो जाना चाहिए. बिल्कुल. आई फील बिकॉज जब बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है, अगर आप सोचते हैं बच्चा सबसे कम सीखता है, बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है. सबसे ज्यादा सीखता है. या उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी है, जो अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा है. इसलिए यू हैव टू मोल्ड अ चाइल्ड व्हेन द चाइल्ड इज स्मॉल. यू कैन नॉट मोल्ड अ चाइल्ड व्हेन अ चाइल्ड इज अडल्ट. स्पेसिफिक एज के इसी एज तक आप सीख सकते हैं. सी there is any age that you can start. Whatever age you start is the right age to start. But if you want to start in your child, the child should have an understanding. मतलब उसको समझ आनी चाहिए कि आपको टीचर क्या सिखा रहा है. क्या हाथ हिलाओ या किक मारो या stand straight, to do this kind of a block. तो वो उसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है. और एवरी बच्चे के अंदर अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट लेवल्स पर आती है. So I would say the right age for to start into martial arts is 3.5 to 4 years. Okay. In fact, Neelam, I would like to add on, like मेरी बेटी भी जाती है taekwondo की क्लास में, and I have literally seen the पर्सनालिटी चेंज. हाँ, मतलब पहले ऐसा था कि अगर कुछ भी होता था उसके भाई बहन ही उसे मारते थे ना. वो बड़ी है जबकि सबसे, बट उसको भाई बहन भी अगर मारते थे तो वो रोती थी. पर अब ऐसा हो गया कि एटलीस्ट वो जैसा कि कहा है, वो रेज अपनी वॉइस रेज करती है. एटलीस्ट शी डिफेंड्स हरसेल्फ. भले वो मारेगी भी है ना. हाँ, शी हैज बिकम डेफिनेटली. ऐसा आता है चेंज. जी. तो हम ये कह सकते हैं तरन्नुम के हमारे जो व्यूअर्स हैं, इन्हें एक चीज जो करनी चाहिए, वो ये अपनी बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखाएं. सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए. बिल्कुल. बिकॉज ये आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. हम हर चीज़ पर फोकस करते हैं. वी वॉन्ट आवर गर्ल्स टू एक्सेल इन इस्लामिक एक्टिविटीज़, एक्सेल इन स्कूल, एक्सेल इन टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो. दैट इज़ रिक्वायर्ड. लॉ चेंज होगा, हमें जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सब लेटर ऑन की चीज़ है. इम्पॉर्टेंट है कि हम खुद अपने अंदर इतना पावर लाए, इतने पावरफुल बन जाए कि हम अपने आप को डिफेंड कर पाए. बिल्कुल बिल्कुल. है ना जी. डॉक्टर तहसीन, अक्सर कॉमन पब्लिक जो होती है वो लाइक अगर किसी के साथ रेप हुआ है, जैसा आपने पहले कहा कि वो लोग लाइक अगर मैं वापस वो लड़की अगर वापस कॉलेज जाएगी तो वो उसे एक हक करने में, उससे बात करने में भी डरेंगे. और लाइक उसको ये ज़्यादातर भले उस टाइम पे उसके लिए थोड़ा बोल देंगे कि हाँ बेचारी ट्रॉमेटाइज्ड, उसके ट्रॉमा के साथ सब लोग थोड़ा सहानुभूति कर देंगे, एम्पैथाइज कर देंगे, बट लेटर और उसी को ब्लेम करते हैं. तो क्या ऐसे लोग भी मेंटली सिक है? जो यू कैन call them as mentally sick, but unfortunately this is what we are learning, this is what our culture is teaching us, this is what we are seeing around. Like even as kids, हम जब छोटे रहते हैं तो मम्मा ने ऐसे दुपट्टा पहना या मम्मा ने ऐसा हेयर स्टाइल किया, अब्बा ने ऐसे बाल किए. So our parents or our adults are our role models. So somewhere we are seeing this kind of behavior around us. And obviously when we are seeing that kind of behavior, we are inculcating that, we are learning that. We are learning it. So first of all, not mentally sick, but that kind of maturity, emotional maturity is not there. तो उन्हें भी अपनी माइंडसेट चेंज करना चाहिए. ऐसे लोगों को भी अपनी माइंडसेट चेंज करना चाहिए. We all need to change our mindsets. मैम, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज भी हमारे यहाँ कुछ लोग,
बाकी लोग तो काफी इम्प्रूव हो गए, लेकिन कुछ लोगों की क्या मेंटालिटी है? कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों बातें हैं जिस बातें से यार, यो से कहना मेरा। लड़का लड़की गलती करे हैं तो लड़के को खाली भागीदार क्यों माना जाता है? लड़की को घर बिठा देते हैं, लड़के को जेल भेज देते हैं। हाँ, रेप की केसेस में भी लड़कियों की गलती होती है। लड़कियों की भी तो कुछ गलती होगी, जब भी तो रेप होया है। रेप के केस में टीचर्स कहते हैं कि इसमें लड़की भी गलती करते हैं। लड़कियां लड़कों को देख के स्माइल करती है तो वो अगलों को ऐसे लगता है कि हमारी से आकर्षित हो रही है, इस वजह से रेप होता है। आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट जब तरन्नुम आज भी मैं लोगों को देखती हूँ ये बोलते हुए कि वो रात में बाहर निकली थी, उसने छोटे कपड़े पहनी थी, ताली है, मतलब रेप केसेस में आप कह रहे हो ताली एक हाथ से नहीं बचती, लड़की ने ही अट्रैक्ट किया होगा, वो बाहर क्यों गई थी? वी आर एंटरिंग 2020 नाउ। हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। मैम ऐसी मेंटालिटीज़ वालों के लिए आप क्या कहेंगी? सी इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं खुद अपनी सोच बदलूँ। आई कांट मेक, मैं आपकी सोच नहीं बदल सकती, मैं उनकी सोच नहीं बदल सकती, आप मेरी सोच नहीं बदल सकते। तो हम एज इंडिविजुअल्स अगर हर एक इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट करना चालू करें, थिंग्स विल गेट मच मोर ईजियर। तो रेप इज़ समथिंग विच इज़ फोर्स्ड अपॉन यू। ये कोई बुलाता नहीं है दैट यू कम एंड यू रेप मी। जी, शी वांट्स टू हैव सेक्स, शी विल गो एंड हैव इट विद द पर्सन दैट शी वांट्स। So how is she attracting it? Yes, basically. See, I mean, as simple as we all are working women, and there are times I have to leave the hospital at maybe 11:30 at night and go home. Of course, there's always a worry at home that, you know, oh, she's not come back, it's late or something, and I ride a two-wheeler. So obviously those concerns are always there, right? Because here, not because probably your child will do something wrong, but unfortunately the environment is such. And to make that environment safe is something which is a responsibility of each and every individual. हम ये नहीं बोल सकते that, I mean, how can we have a population of billions and the number of policemen or the number of people patrolling the area is a small number. I have spoken to a lot of policemen where I have taken lectures for stress management for them. They're all overworked. They're hardly going home for their child's birthday or they're celebrating any festival. So we can't just blame them. You want things to become safer for us, you want the environment to be safe, then you start at home. You start with yourself. You can't go on and give lectures to others that, oh, you should change, this is how you should look at it. One, we make our daughters more confident, we make them strong. मैम आपने कहा कि लाइक सेल्फ डिफेंस बहुत अच्छी चीज़ है, हमें पावरफुल बनाती है, पर क्या अगर 3-4 लोग एक अकेली लड़की पर हमला करते हैं यानी उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो वो कैसे अपने आप को डिफेंड कर पाएगी? प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ये जो आप देखते हो कि हाँ एक लड़की और 3-4 लोगों को मारती है, इट्स नॉट द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ लाइफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इतनी कैपेसिटी, मतलब आप सोचो ना, 3-4 लड़की भी मिलके एक लड़के को आराम से मार सकती है, एक लड़का भी 3-4 लड़कियों से अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएगा। फॉरगेट द अदर वे अराउंड, ऑलराइट। बट अगर वो डिफेंड नहीं कर सकती है, डेफिनेटली शी कैन एटलीस्ट गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। Definitely it is possible. Why isn't it possible? Maybe the girl is carrying some kind of accessories with her, maybe a mobile phone, maybe her purse. Anything can be her weapon, anything. Maybe she has a dupatta which she can put it around the neck to, you know, strangle something. Maybe she must know the most important part to connect on the most important delicate parts of the male. It is the Adam's apple, it is the genital parts of the man. Where forget getting up and touching the girl, the person will be completely down. Agar aap ek aad do ko bhi you can escape from this situation, you can move away from that. You don't have to be a superwoman or a spider woman to be fighting with them. No, you just get yourselves out of that situation. Yeah. With using whatever you have with you. Yeah. Everybody carries a mobile now. Yeah. Everybody carries a purse now. Anything, मतलब आपके पास जो है, जो जैसा आप कैसा react करोगे, मतलब एक को ये मारा, एक को वो मारा, and you run away. You have your legs. You have your legs. You run away with them. Yeah, you have your voice. You shout aloud. You have a stone on the road. You throw it at them. Yeah. At least वो reaction से आपको 2-3 कदम और मिल जाएंगे. तो we have to be very quick in our reflexes. Correct. Very quick. जो आपने whatever you have in your hand, maybe a mobile phone, maybe you have a keychain, a strong
heavy keychain, whatever every woman carries, right? So important parts जैसे कि आपने बताया कि like आर्म यहाँ पे ये Adam's apple. You don't have to hit on the body parts. ऐसे मारोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. इधर भी मारोगे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा. People don't know how to make a fist. You go for the nose. You go for the Adam's apple. You go for the pubic area. Okay. You can go for the knee. You don't have to go on the thigh because it's already conditioned. You go on the knee where the bone breaks. There is no conditioning for the bones. There is no conditioning for the joints. So actually, I want to know the parts, जो important parts, जैसे कि आपने का बताया कि ये joints. You can go directly on the shin, okay? If you have your sandal or something, you can go directly on the shin. वो आदमी नीचे बैठेगा. You can go on the knee. If you don't know how to kick, एक धक्का भी knee को ना आपके knee को dislocate कर सकता है. आप एक kick अपने उसको नीचे to the groin. You can kick to the groin. Can anybody condition the groin? No way. The Adam's apple. अगर आप एक जोर से पंच इधर मारो ना तो शायद आदमी मर भी सकता है. आपको पता होना चाहिए कि आपको उस सिचुएशन में which are the important organs where you can connect with a man. Exactly. हम खाली ऐसे कोई भी बॉडी पार्ट पे मारने आप इधर करोगे, wasting your time, you're wasting your energy. You land, वो आपके हाथ पकड़ लेगा. So it is very important कि हम वो ऐसे parts पता हो और वहीं पर हम मारे और 3-4 भी क्या हो उस टाइम पर एक को हमने मारा, एक दो को हटा, you move away from the situation. हट जाएगा. You see, nobody, even if you tell me practically, if you tell me 3-4 लोग सामने आएंगे, 4-5 लोग सामने आएंगे, I will move away. अगर आप बोलेंगे सबको धुला के मारो, it is not possible. वो सिर्फ आप फिल्मों में देख सकते हो. हम अपने आप को डिफेंड करने के लिए डिफेंड कर सकते हो. मैं भाग सकती हूँ. बिल्कुल. अपने आप को बचाया और मैं भाग गई. बिल्कुल. जब एक दो को पड़ेगी ना, दूसरे दो ऑटोमेटिकली ठंडे हो जाएंगे. एटलीस्ट इस पार्ट पे मार के थोड़े वो डाउन तो हो जाएंगे. तो भागने का जो पार्ट है मैं वो लेटर ऑन कर पाऊंगी. Definitely. और आपके पास पैर है. You use your legs. You're not a coward if you're running. You're not a coward. Please don't get that wrong. You are running away to not get yourself into that situation. Running away from that situation. Running is also important. Obviously, it is also. Fight करना नहीं है अपने आप को. जरूरी नहीं है. I said whatever demands, whatever the situation demands. Maybe a shout. Maybe running away, maybe a fight in that particular situation, whatever the situation demands. Whatever demands to be defending yourself, you need to do that. Exactly. मासूमा मैम, जहाँ हमने बात की कि अपने आप को डिफेंड किस तरह करना है, वही एक और चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो आज हमारी लड़कियों को ये पता हो कि एज़ पर द लॉ वो अपने साथ क्या कैरी कर सकती हैं. पेपर स्प्रे, जिसके बारे में हम हर बार सुनते हैं, पेपर स्प्रे के अलावा वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम हमारे साथ रख सकते हैं? और जहां हम बात कर रहे हैं सेल्फ डिफेंस की, वहीं अगर डिफेंस में जो अक्यूज्ड है वो इंजर्ड हो जाए या मर जाए तो उस पर लॉ क्या कहता है? Oh, in self defense, right, section 100 allows that. Oh, yes. If you apprehend an assault wherein you apprehend that the person is going to rape you, and in that situation you raise your hands in such a manner or you hit at such a place which causes death to the other side, of course to the accused, it is considered as self defense. But फिर हमें लॉ से पास नहीं होना पड़ेगा, यानी जुडिशियल सिस्टम से कि प्रूफ चाहिए होंगे, सब चीज़ें कुछ चाहिए होगी हमें प्रूफ करने के लिए कि भाई हमने सेल्फ डिफेंस में ही किया, ऐसा कुछ है? Of course, you have to, when the moment that happens, then of course you have to call the cops and then you have to intimate what was the situation about and why this has happened. Okay. So you have a right, even in self-defense, if you kill the person, but you're apprehending the rape, you're apprehending some lustful behavior, it is acceptable in law, in self-defense. इसके अलावा what can we carry as per the law? कौन सी चीज़ें हमारे लिए allowed है जो हम हमारी बैग्स में रख सकते हैं? Pepper spray, some heavy keychain. You can't carry knives at certain places, at your workplace and all. You can't carry stuff like that. But anything that will help in defense, which is not something which shows as a weapon, you can carry that. Okay, यानी पेपर स्प्रे कैरी कर सकते हैं. Yes. Anything heavy, meaning through the items that you use, any of the items that you use, you can have something in that. Some keychain, heavy keychain, not a knife, of course. It may be allowed at certain places, it may not be allowed at certain places, so you have to be careful of that. Then there's a comb I just saw today in the morning, which has, the handle has a knife thing in it. Okay. Yeah, I just saw that in the morning.
सो अगर हम डिफेंड करते हुए उस अक्यूज को मार देते हैं तो हमें खुद से पुलिस में जाके लाइक सरेंडर करना चाहिए, है ना, और पूरा सिचुएशन बताना चाहिए. देन वी कैन यूज दैट सेल्फ डिफेंस वाला लॉ. Trying to defend yourself, there are certain marks that are going to come on you. Yeah, exactly. And apprehension, of course, is circumstances where you were, circumstantial evidence that we call it. That matters. लास्ट में हम चाहते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, और खास करके अगर हम बात करें लड़कियों की और औरतों की, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? So what we can do is, one, have a plan in your mind. I hope you never have to face such a situation, but have a rough plan in your mind that, you know, if I come across such a situation, because most of us freeze. Yeah. ठीक है, I mean ये सिचुएशन नहीं है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो हम डर जाते हैं, उसकी वजह से फ्रीज हो जाते हैं, ना हम भाग पाते हैं, ना हम लड़ पाते हैं. तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर दैट यू आर नॉट गोइंग टू फ्रीज, बिकॉज दैट इज द वर्स्ट रिएक्शन दैट यू कैन हैव. ऐसा नहीं है कि जानबूझ के होता है, बट दैट इज अ सिचुएशन दैट यू विल नेवर बी एबल टू गेट आउट ऑफ दैट थिंग. And secondly, we as human beings should try to understand and respect each other. Yes, very important. Of course, how we have spoken about self-defense and carrying a pepper spray and stuff like that is important. And we as parents, the upbringing of our children, both the girls and boys, if we can make some modifications in that, make them into better individuals, then I think we have some amount of positivity out there. Shaheen ma'am. Actually, I would go just continue with her. Definitely हम हमारी लड़कियों को सिखाना चाहिए. We have to make our daughters more stronger physically, not only physically, even mentally, and always, and all this starts from home. Not only the girls, we need to educate, most importantly educate the boys also, that they need to respect women. That is very, very important at home, in when they are married, even outside at their workplace, in wherever they travel. The respect must come from the male first, okay, and not obviously if it were female, automatically the female will start feeling safe when you know the male around is more respectful. And jahan tak ki self defense, if we've spoken about it, you have to make your girls stronger. वो तो करना ही है आपको, definitely keeping the scenario into in your mind, because everything will take a lot of time to change. Education, वो culture inculcate करने को every family में, हर ये सब चीज जो तालीम होती है ना, वो घर से शुरू होती है. तो आप घर से ये सब शुरू करो. आई डोंट थिंक ये कभी इंशाल्लाह आगे जाके ऐसी कोई बड़ी नौबत नहीं आए क्या जो हम अभी हमारे कंट्री में ये हालात है हमेशा, बिकॉज इट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम एवरी होम. बोलते हैं ना, बूंद बूंद से समुंदर बनता है. अगर हम गवर्नमेंट को बोले, पुलिस को बोले, सब चीज को बोले, नो मैटर व्हाट, वी मे चेंज द लॉज, इफ यू डोंट चेंज आवरसेल्व्स, इफ यू डोंट चेंज एन इंडिविजुअल, नथिंग विल चेंज. राइट. As per me, be aware of the laws. When you're in a situation, you have to protect yourself. There's nobody there to protect you. It is just you. So you have to make sure that you take care what kind of a situation you're getting into. So if you can avoid, it is better avoiding rather than calling for the situation. I agree, no girl calls for rape, but then you need to be careful. Nobody can protect you except yourself. Exactly. So Neelam, इट इज़ जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स ने हमें बताया, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम हमारी मेंटालिटी को चेंज करें और मेंटली प्रिपेयर्ड रहे फॉर एनी सिचुएशन. अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें क्या करना है. हमें एक्सपर्ट ओपिनियंस मिल गए कि सेल्फ डिफेंस में हमें क्या करना है, लॉ वाइज हमें क्या करना है, और उसके अलावा हमें सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रास रूट लेवल पर हमारी बच्चों की अपब्रिंगिंग ऐसा करना है कि फ्यूचर हमारा एटलीस्ट सेफ हो. इट्स टाइम कि हम अपने आप को चेंज करें, अपने आप को अलर्ट करें, और साथ ही साथ जो हम अक्सर कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, आई वुड से व्यूअर्स, अब बेटियों को सेल्फ सफिशिएंट बनाओ, बिकॉज आज वो ज़्यादा ज़रूरी है. वी नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल कि हम चीज़ें खुद हैंडल कर पाए और अपने आप को खुद बचा पाए. जी, जहाँ हम इतनी इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो हमें एक और चीज़ समझना चाहिए, अब हमें अपना हीरो खुद ही बनना है. खुदा ना खास्ता अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं तो सबसे पहले डरिए मत, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाइए, और कोशिश करिए कि आप सेल्फ डिफेंस सीखें, बिकॉज अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं या कोई और ऐसी सिचुएशन में है तो आप उनकी मदद कर सकें. ऑन दिस नोट हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ. पैगाम इंसानियत. शुक्रिया.